Assalamu alaikum and good afternoon to all of you. I am Ambreen Ali. I am a clinical psychologist at Kazim Trust. I would like to welcome you all on our fourth episode of Coffee with Katie. Before introducing my guest, I would like to tell about Kazim Trust. कि Kazim Trust 12 साल से पिछले 12 years से अपनी services दे रहा है to different child and adults who are going through neurodevelopmental disorder, specifically ADHD, learning difficulty and other comorbidities. और Kazim Trust ये aim रखता है to empower mind that learn differently. और Kazim Trust का जो एक और एम है वो ये भी है कि लोगों को साइको एजुकेट करे, लोगों को बताए कि ये चीजें क्या होती है और क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है. इसी एम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि हम लोग मिथ्स डिस्कस करेंगे, करेक्ट इन्फॉर्मेशन और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट ADHD, जिसके लिए आई वुड लाइक टू वेलकम आवर ऑनरेबल गेस्ट मिस डॉक्टर आयशा मियां. डॉक्टर आयशा मियां के बारे में बताते चलो, शी वॉज एसोसिएट प्रोफेसर एंड immediate chairperson of Department of Psychiatry at AKU. She is US trained psychiatrist for adult, child and adolescents, and she's our board of advisor for a very long period of time. So assalamu alaikum Dr. Ayesha Mian, how are you? Walaikum assalam, Ambreen. Thank you for having me on Coffee with Katie. This is a wonderful opportunity. और आप लोग हमेशा बुलाते रहते हैं. I think आपने you just talked to all of us about Kazim Trust, and I really think apart from all of the other really wonderful things that Kazim Trust is doing, this whole awareness that you all have been raising now for the past so many years has been instrumental in changing कि लोग किस तरीके से learning differences के बारे में, और जो बच्चे जिनको थोड़े से different learning capacities हैं उनके बारे में just this whole idea of improving people's capacity in this area is really amazing. So thank you for having me. It's always a pleasure, Dr. Ayesha Mian. तो Dr. Ayesha Mian, हम start करते हैं अपना live broadcast. तो सबसे पहले तो our audience would want to know what is ADHD, attention hyperactivity, attention deficit hyperactivity disorder, जिसको हम ADHD कहते हैं, वो होता क्या है? Okay. So ADHD is a neurodevelopmental disorder, which means कि it's whatever is happening in the brain. जो मैं हर एक को हमेशा बताती हूँ कि it's not something that the children are making up, it's not something that we have made up. There is something happening, there's something different happening in the brains of these children. So what we call a neurodevelopmental disorder. And as जैसे आपने कहा, it stands for attention deficit hyperactivity disorder. So दो sort of major components होते हैं ADHD के. एक ये कि बच्चे are unable to attention deficit जिसको कहते हैं, are unable to concentrate or focus or sustain focus on a particular task for a prolonged period of time, जिसके लिए उनको जरूरत है वो नहीं कर पाते. दूसरा, the other piece is the hyperactivity piece, के जिसको बहुत ज्यादा हम लोग कहते हैं कि they can't sit still, जैसे उनको चाबी दी हुई है, they're always on the go, they're restless, they're fidgety. So these children tend to be impulsive as well. They don't in terms of what they want to do, how they want to do things, तो एकदम से कर देते हैं, ये नहीं सोचते कि इसका consequences क्या होंगे. So, there are lots, it's a vast disorder. जब मेरे पास patients आते हैं तो I take a good 15 to 20 minutes just to explain to them कि ADHD है क्या. But I think the three core symptoms are always inattention, hyperactivity and impulsivity. All right. डॉक्टर आयशा मियां, आप अगर एज रेंज को बताएं कि ADHD किस एज रेंज में हो सकता है, और ये एक मिथ भी है हमारी जो फर्स्ट मिथ जो हम डिस्कस भी करेंगे कि क्या ये सिर्फ बच्चों में होता है, क्योंकि मेनली बच्चे ही लर्निंग इश्यूज का अलाइन हो नहीं हो पा रहे होते, तो क्या ये सिर्फ बच्चों में ही होता है या अडल्ट और ओल्ड एज पीपल में भी हो सकता है? So for everyone, ADHD, again, जैसे मैंने कहा कि it's a neurodevelopmental disorder. So when it happens, it manifests usually around the age of 4-5 years old, या फिर बच्चे जब स्कूल शुरू करते हैं और हम academic difficulties देखते हैं. कुछ बच्चों में जिसमें बहुत severe होता है तो थोड़ा जल्दी भी पता चल जाता है. कुछ बच्चे जो बहुत ज्यादा intelligent होते हैं with higher IQs, उनका शायद class 6 का 7 तक ना पता चले, because they're able to manage their ADHD symptoms or compensate for them because of their high IQ. So पता हमें usually
younger age group में चलता है, around 5 to 6 years of age, but this is a disorder that stays. It's a disorder for life, right? So it's not something जो बच्चों में होता है और खत्म हो जाता है. होता ये है कि as you grow older, you learn to live with your ADHD. You learn to do things that are of interest to you. So आपके जो ADHD के lack of interest के या lack of sustainability of attention के जो symptoms होते हैं, those tend to get better because you're doing what you want to do. Instead of जब schools में हम होते हैं या हम जब बड़े हो रहे होते हैं तो हमें साइंस भी पढ़नी है, उर्दू भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़ना है, इस्लामियात भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ना है, और अगर हमारे इंटरेस्ट का कोई एक आध सब्जेक्ट नहीं है, so for children with ADHD, they have a hard time focusing on that area. It's a good question you ask, and I'll just take 30 seconds to elaborate on this, Ambreen, because parents अक्सर पूछते हैं कि आप बोल रही हैं कि वो फोकस नहीं कर पाते, लेकिन वो 2-2 3-3 घंटे बैठ के अपने वीडियो गेम्स खेल रहे हैं. या फिर कुछ बच्चों को किताबें पढ़ने का शौक है, तो वो डॉक्टर आयशा इतनी मोटी मोटी किताबें लेकर बैठे होते हैं और 2-2 3-3 घंटे पढ़ रहे होते हैं. तो प्राइमरीली मकसद यही है कि अगर उनके इंटरेस्ट की चीज है और अगर उनका अटेंशन सेंटर ब्रेन में कॉन्स्टेंटली ट्रिगर हो रहा है बिकॉज वो अपने पसंद की चीज कर रहे हैं, तो मसला नहीं होता. इट्स व्हेन दे आर डूइंग समथिंग दैट इज बोरिंग टू देम, दैट इज नॉट गेटिंग देयर अटेंशन, दैट्स व्हेन दे हैव अ मच हार्डर टाइम सस्टेनिंग इंटरेस्ट. बिल्कुल, आई गेस यू हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी अमेजिंगली, बिकॉज जब भी पेरेंट्स आते हैं तो वो यही एक चीज के साथ आते हैं कि कंप्यूटर में तो वो 2 घंटे 3 घंटे बैठा हुआ होता है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि उसको ADHD है. सो या यू एक्सप्लेन इट वेरी वेल. डॉक्टर आयशा, एक क्वेश्चन हमारे पास बहुत इनिशियली आ गया था कि यूजुअली साइकाइट्रिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जिसमें डिफरेंट स्टिमुलेंट्स होती है. रिटलिन इज वन ऑफ द स्टिमुलेंट. तो बच्चा इज हाइपर एक्टिविटी, राइट, एंड you're prescribing a stimulant like Ritalin or stuff. So how does it affect their body? क्या mechanism होता है कि जिसके through इनकी hyperactive ADHD के symptoms control हो? Right. So again, a very good question. I think it will be hard to explain the whole sort of mechanism जो कि brain में हो रहा है, but pretty much what happens in ADHD is कि there is a neurochemical in your brain जिसको हम dopamine कहते हैं, और वो जो है जब in for children with ADHD उसकी there's a deficiency in a sense कि जब वो उस एरिया में पहुंचता है जहाँ पे अटेंशन की जरूरत है, तो इट्स immediately gets sort of taken up या reuptake उसकी हो जाती है by other molecules, and it's not left in that brain area to give attention to what needs to be given attention to. What Ritalin or other stimulants do, हम Ritalin इसलिए बहुत ज्यादा बोलते हैं क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ Ritalin available है और सारे stimulants पाकिस्तान में available नहीं है, although there are lots of different variations of stimulants. So what stimulants do is कि वो जो आपके areas या cells या जो भी आप उसको molecules कह लें, जो कि आपके dopamine को दोबारा से reuptake कर रहे हैं और आपके brain में रहने नहीं दे रहे, उनको it blocks them. And when it blocks them, it allows dopamine to stay in your brain centers जहाँ पे attention की जरूरत है. So pretty much what जब Ritalin हम देते हैं, तो Ritalin is saying to the brain that pay attention to this. This is important. Those voices which normally don't happen with Ritalin. Also एक और चीज जो common जिन बच्चों को ADHD नहीं होता या जिन लोगों को ADHD नहीं होता, उसमें आपको एक particular task के लिए attention की जरूरत है. आपकी let's say math की क्लास हो रही है और आपको now you need to focus on your math class, but आपके दूसरे areas of the brain are also active. Okay, एक person जिसको या बच्चा जिसको ADHD नहीं है, so that person is able to जिसको हम white noise कहते हैं, जो दूसरे areas active हैं, वो जो है उस white noise को से थोड़ा he is able to use that white noise to focus on the चीज जिस पे attention की जरूरत है. जिनको ADHD होता है जिन बच्चों को, उनको जो है ये white noise distract करती है बहुत ज्यादा. So even though they need to focus on now an area जो कि उनको math समझाएगा, जो बाकी brain centers, brain areas जो हैं वो activate हुए हैं, वो उधर ज्यादा focus कर रहे होते हैं या उधर भी उनका focus जा रहा होता है. They are not able to dim that noise to focus on one area. Ritalin helps to amplify the noise जहाँ पे जरूरत है. So for example, अभी मैथ पढ़ने के लिए वो सेंटर्स एक्टिवेट जो हुए हैं उधर ज्यादा जरूरत है टेंशन की, तो उनको वो एम्पलीफाई करती है. So they are able to say right now we need to stop focusing on other things and we need to focus on this.
राइट, आपने बहुत अच्छे से बहुत इजीली समझा दिया। आई गेस जो साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट नहीं भी होंगे वो भी पेरेंट्स भी बहुत इजीली इस चीज़ को समझ सकते होंगे। डॉक्टर आयशा मियां, एक कॉमन एक और क्वेश्चन जो हमारे पास आते हैं कि क्या एडीएचडी मेडिसिन से ठीक होता है या एडीएचडी थेरेपी से ठीक होता है, और कुछ ऐसे मिथ्स भी है कि बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं मेडिसिन से, फिर मेडिसिन के बगैर वो बिल्कुल वर्क नहीं कर पाते। तो क्या रोल होता है साइकोलॉजिस्ट का, साइकाइट्रिस्ट का, मेडिसिन का इस एडीएचडी की क्योरिंग प्रोसेस में, ट्रीटमेंट प्रोसेस में? Okay. So another great question, and since we are busting myths, I guess ये एक myth है जो हम बेचारे साइकाइट्रिस्ट के साथ बहुत एसोसिएटेड होती है हर वक्त कि डॉक्टर आयशा के पास नहीं जाना, वो फौरन दवाइयों पे डाल देंगी। तो एक तो डॉक्टर आयशा फौरन दवाइयों पे नहीं डालेंगी। ओके, तो आपको मुझे बहुत कन्विंस करना पड़ेगा, उस बच्चे को कन्विंस करना पड़ेगा, उस एडीएचडी को मुझे कन्विंस करना पड़ेगा कि अब दवा के बगैर प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही है। अब अगर हम दवा नहीं देंगे तो बच्चे का ज्यादा नुकसान हो रहा है वर्सेस दवा देने से जो भी इश्यूज होते हैं, जो भी कंसर्न्स होते हैं। सो हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, और जब दवा को ना देने के मसले उससे और बढ़ जाते हैं, सो दैट्स व्हेन आई टॉक टू पेरेंट्स एंड से ओके, लेट्स ट्राई टू स्टार्ट मेडिकेशन नाउ। Of course, there's a major role for psychologists, there's a major role for parents, there's a major role for schools in all of this. All of those things have to come together, and the psychiatrist as well, to help the child, जिसमें कोशिश हमेशा पहले यही होनी चाहिए कि हम जो है दवा के बगैर मैनेज करें। okay? हमेशा, and this is for any chronic disorder, ये सिर्फ ADHD के स्पेसिफिक नहीं है। मैं अक्सर पेरेंट्स को एग्जांपल देती हूँ कि अगर somebody comes in with a little bit of high blood pressure या a little bit of डायबिटीज, उनका थोड़ा सा ग्लूकोज बढ़ा हुआ है या HbA1c बढ़ा हुआ है या उनको जो है थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हो गया है, तो डॉक्टर हमेशा उनको पहले बोलेंगे कि देखें आप खाने में नमक कम करें, आप एक्सरसाइज शुरू करें, आप हेल्दी लाइफस्टाइल बेहतर करें, and let's try all of those things. If those things don't work out, then we will try to see, or we will need to talk about medication. So that's exactly what happens with ADHD. We've got to try everything else. We've got to try, घर में किस तरीके से structural changes हो सकते हैं, स्कूल में पढ़ाने में किस तरह structural changes हो सकते हैं, psychologist कैसे help कर सकती है, occupational therapist कैसे help कर सकते हैं patients को in terms of improving their attention span. And if at some point we realize that now, all of those things are happening, we don't stop those things, we continue those things, all of those things are happening, लेकिन उसके बावजूद बच्चे को मुश्किल हो रही है, बच्चे को एकेडेमिया में मुश्किल हो रही है, बच्चे को अपने सोशल रिलेशनशिप्स मेंटेन करने में मुश्किल हो रही है, बच्चे को घर में मुश्किल हो रही है अपने माँ बाप के साथ, अपने घर वालों के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करने में, और एक नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है घर में, माहौल में, because of the symptoms. So that is when we talk about using medications. And as I said, it's a neurodevelopmental disorder. I explained what Ritalin does. So it neurobiologically helps the child to take care of some of the symptoms. बिल्कुल ट्रू, दैट्स एक्चुअली वेरी ट्रू। एंड अगर बच्चा एक्सट्रीम केसेस के साथ आता है, हाइपर एक्टिविटी के साथ आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है साइकाइट्रिस्ट के पास रेफर करना। और आई गेस यहाँ पर एक साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का रोल टुगेदर चलता है कि विदाउट मेडिसिन थेरेपी अफेक्ट नहीं कर पाती, थेरेपी के साथ मेडिसिन वुड ऑफ कोर्स एम्पलीफाई द रिजल्ट, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा डॉक्टर आयशा मियां, मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं तो यूजुअली क्लाइंट्स ये भी कहते हैं कि आप भी क्या बोल रही है एडीएचडी बच्चे को, मेरा तो पहला बच्चा भी हाइपर एक्टिव था, मैं खुद हाइपर एक्टिव था, बच्चे तो एक्टिव होते ही है, ये एडीएचडी वाला कुछ भी, इट्स नॉट अ रियल डिसऑर्डर, राइट? सो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? So, and I'm very, very transparent about these things. मैं हमेशा, I talk to the community, I talk to parents about, all of the things जो कि, हमारे disorders के बारे में myths जहाँ पे हैं, and the things that people write on the internet about, ADHD and about child psychiatrists. So at some point somebody had said कि, child psychiatrists needed a diagnosis, तो उन्होंने खुद ये बनाया diagnosis of ADHD. So no, so it is a very valid, very true diagnosis. People suffer from it. It is the most researched diagnosis in child and adolescent psychiatry. मैं पेरेंट्स को भी ये बताती हूँ कि शायद पीडियाट्रिक्स की पूरी हिस्ट्री में स्टिमुलेंट से ज्यादा रिसर्च किसी दवा पे नहीं हुई है। पिछले 100 साल से हम उस पे एविडेंस जमा कर रहे हैं, and it's very clear that they help.
right? So of course ADHD पहले भी होता था, and if parents are saying कि हमें भी था, हम भी hyperactive थे, then it's very likely कि उनको था. मैं जैसे हमेशा कहती हूँ, the apple does not fall far from the tree. So and there is a really big genetic component to ADHD. So किसी ना किसी को ADHD family में होता है, जिसकी वजह से इस बच्चे को भी ADHD हुआ है. Now what is happening now is that, one, we are able to diagnose it better. We know that this is a concern. पहले ज़माने में हमारे, and it's like in our lives, let's say in our generation and the generation before us, the demands on a child's life were much less. Academic demands बच्चे की जिंदगी में कम थे, social demands बच्चे की जिंदगी में कम थे. बच्चे स्कूल जाते थे, 1-2 बजे तक वापस आते थे, फिर वो खेलते रहते थे. They used to enjoy life. There was no concept of co-curricular activities, or there was no concept of sports and piano classes and tuition centers and all of those things that we do. Summer vacations में वाकई vacation होता था, बच्चे और कुछ नहीं करते थे. So a lot of times that ADHD kind of उनके symptoms उस तरीके से परेशान नहीं करते थे, या उस तरीके से वाजे नहीं हो पाते थे जैसे आजकल हो पाते हैं. बहुत ज्यादा ये होता था कि पेरेंट्स कहते थे फैमिली में कि ये बच्चा तो स्कूल में बिल्कुल पढ़ता ही नहीं है, इसने बहुत तंग किया स्कूल में. एंड देन कुछ फैमिलीज में उनको पढ़ाई में से निकाल के वोकेशनल ट्रेनिंग में डाल दिया करते थे, बिकॉज ये तो एकेडमिकली he would have a hard time, or he was very naughty in school. So it happened all the time, but we managed it differently now because academics is competitive. बच्चे की जिंदगी पे डिमांड बहुत ज्यादा है. एक बच्चे को हम सुकून से सांस तो लेने नहीं देते हैं. वो स्कूल से वापस आता है तो उसको हम ट्यूशन सेंटर भेज देते हैं, फिर उसके बाद हम उसको मदरसा भेज देते हैं, या कारी साहब आ जाते हैं घर पे, फिर उसके बाद वो होमवर्क बैठ के करते हैं. तो रात को 10-11 बजे तक जब वो ये करते रहेंगे, तो फिर अगर उनको ADHD है तो वो बहुत it spills over. We see it all the time, and that is why we know that there is a problem, right? So अगर one of the things that you said कि हम दवा से पहले और क्या चीजें कर सकते हैं, तो एक चीज हम ये कर सकते हैं जो मैं हर एक पेरेंट्स को बोलती हूँ कि एक तो पहले आप बच्चे की जिंदगी थोड़ी आसान करें, राइट? तो स्कूल, उनकी ट्यूशन सेंटर्स और उनका होमवर्क टाइम और उनका ये एक्स्ट्रा करिकुलर एंड ये को करिकुलर एंड ये सब उसको कम करके लेट देम प्ले, गिव देम फ्री टाइम टू डू थिंग्स दैट दे वांट टू डू, which are very, very important. And then, so other things like that as well. But yes, so it, of course, when they say it happened, it did happen. It absolutely happened. But, now we are able to diagnose and manage it better. I guess amazingly आपने ये बताया कि I guess parents बहुत ज़्यादा complicate, उनकी लाइफ शायद इतनी complicate नहीं होती जितनी बच्चों की रूटीन complicated हो जाता है, और वो कहते हैं कि ये तो नॉर्मल है, तो सब बच्चे कर रहे हैं. So there is individual differences, of course. हर बच्चा हर चीज में बेस्ट नहीं हो सकता. So इसी के साथ हमारे पास एक क्वेश्चन आया है. मिस सोहेला पूछ रही कि are ADHD children always hyper? आई गेस एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है जिसका आपने कोई देर पहले जिक्र किया था, बट आप उस पर थोड़ा इलैबोरेट कर दें. So no, they're not always hyper. So there are ADHD comes in 2 types. There is the ADHD, which is the hyperactive impulsive type, and there is the ADD, which is में hyperactivity का component इतना नहीं होता, and that's we call it the ADD inattentive type, जिसमें inattention ज़्यादा होता है. We just because of numbers and जो evidence, the research that has been taken, the ADHD, the hyperactive type, is more common in boys, and the ADD, the inattentive type, is more common in girls. So you will often see that there is the girl who was a daydreamer, या वो अपने जहन में चली जाती हैं, वो quiet है, and those don't get picked up so much because they are not hyperactive, so they are not affecting the environment so much. Disruption कम होती है जब hyperactivity नहीं होती है. तो जिन बच्चों में ADHD के बच्चों में hyperactivity का component नहीं होता, वो अक्सर औकात जो है they go under the radar, and it takes them longer to be diagnosed, to be identified and then diagnosed. Ambreen, I can't hear you. Hello, can you hear me now? Yeah, all right, okay. Guru Talen ने पूछा है कि in which they respond their name. I guess what she meant is के अच्छा, okay, in which age they respond their name. Okay, मतलब वो I guess milestones के बारे में पूछना चाह रही है कि are their milestones delayed? I guess.
Right. So again, wonderful question. So ADHD से milestones का necessarily ताल्लुक नहीं है. Okay. So ADHD is a very different diagnosis. ADHD के साथ you can either just have ADHD, जिसमें आपका IQ is not affected, your learning is not affected, all you have is ADHD symptoms. But there are also some children जिनको ADHD के साथ दूसरे symptoms भी हो सकते हैं. So there can be some children जिनको speech delay है. Two separate things, completely two separate things. ADHD क्या symptom नहीं है, any kind of milestone delay is not a symptom of ADHD. Okay. So it's possible that they may have a speech delay, they may have motor delays. अक्सर देखे जाते हैं in children with ADHD. They may have a hard time with fine motor, जिसमें पेंसिल पकड़ना. A lot of parents will come and say कि इनकी राइटिंग बहुत खराब है या इनकी कलरिंग बहुत डिफिकल्ट है, साफ सुथरी नहीं है. So that could be fine motor. Some may have a difficult time with gross motor, जिसमें visual spatial थोड़े से links होते हैं, so that they fall easily, या swings वगैरह पे चढ़ते हैं तो उनको हर वक्त चोटें लग रही होती हैं, and this and that. So those are motor difficulties, and that's common in children with ADHD. Children with ADHD may also have other like learning disorder, may also have autism, but those are all separate diagnoses. They can exist with ADHD or they cannot. So if somebody is not responding to their name, let's say by the age of 1 or so, if they're not, then I think that usually we kind of say कि first year की जो pediatrics की visit होती है, एक बच्चे का जो pediatrician है वो first year पे देखता है बच्चे को. It's a mandatory visit. हर आपका pediatrician बताएगा कि बच्चे को 1 साल पे चाइल्ड डॉक्टर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जरूर ले जाना चाहिए, जिसमें वो बहुत सारी चीजें चेक करते हैं. तो उसमें वो ये चीजें भी चेक करेंगे कि आर दे रिस्पॉन्डिंग टू देयर नेम, इज देयर हियरिंग ओके, या फिर अगर स्पीच कोई इश्यूज हैं, या फिर दे आल्सो स्क्रीन फॉर ऑटिज्म एट दैट टाइम. आई डोंट वरी अबाउट ADHD. I tell parents not to worry about ADHD until they are 3 or 4 years old and later, because जो hyperactivity के symptoms होते हैं वो अक्सर औकात आपके छोटे बच्चों में होते हैं. जिसको हम terrible 2s कहते हैं, terrible 3s कहते हैं. They're running around, they're doing things, they're getting into all sorts of business that they shouldn't be getting into, or they should be, because it's their, that's what they're supposed to be doing. They're impulsive, they are, they're all over the place. So that kind of activity, increased activity, is normal in a child. So one of the major things that child psychologists and child psychiatrists will always do is to make sure कि जो भी बच्चे के symptoms हैं, और ये मैं सिर्फ ADHD की बात नहीं कर रही, but जो भी बच्चे के symptoms हैं वो age के हिसाब से normal है या नहीं है. So everything has a developmental approach. So hyperactivity in a 2-year-old child is normal, right? So a hyperactive 2-year-old child does not have ADHD. That's a normal child, right? But that kind of hyperactivity in a 6-year-old is not normal. Now that could be other reasons why जो भी उनके हो रहे हैं, it's not always ADHD, but it's not normal. So we need to worry about it कि एक 6 साल का बच्चा जो है टिक के क्यों नहीं बैठ रहा है, सुकून से क्यों नहीं बैठ पा रहा है, right? So that is also important. Exactly. मतलब आपने बहुत अच्छे से हाइपर एक्टिविटी और जो एक्टिविटी है, जो ऑलरेडी बच्चे एक्टिव होते हैं, उस पर डिफरेंशिएट बहुत अच्छे से कर दिया. और मेरा नेक्स्ट पॉइंट भी ये था जो कि आपने कवर कर दिया है. सो आई गेस हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं वो पढ़ूंगी. सना पूछ रही कि बिफोर द कोविड पैंडेमिक किड्स वर एक्टिव, दे पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स, नाउ दे आर कन्फाइंड टू देयर होम्स फ्रॉम देयर ओन सेफ्टी ऑफ कोर्स. व्हाट इम्पैक्ट डू यू थिंक हैज इन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एंड व्हाट इज द अल्टरनेटिव टू स्पोर्ट्स? Right. So thank you for the question, Sana, and I was hoping कि somebody will bring up कि अब अभी जो कोविड हो गया तो हम क्या करें. हम सभी I think मुश्किल में आ गए हैं कोविड की वजह से, and everybody is having a hard time in some way or another, right? कि I think मैंने एक op-ed भी लिखा था बल्कि डॉन में, जिसमें मैंने यही कहा था कि कोविड हर एक को नहीं होगा, लेकिन each and every one of us is going to be psychologically affected by COVID, right? And that includes our children.
एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, चाहे वो ADHD की नीड्स हो, चाहे वो ऑटिज्म हो, चाहे वो किसी को cerebral palsy है या learning disorders है, I mean those children are having an even harder, every child is having a hard time, but I think those children are having an even harder time. And parents also are kind of in a difficult place, because पहले वो therapies पे जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, OT ST वगैरह different चीजें हो रही थी जो कि अब नहीं हो पा रही हैं. So first of all, I think the most important thing to do, जो कि आसान नहीं है, लेकिन I would urge every parent कि try to maintain a schedule. It's very very important. ऐसा नहीं होने दें कि बच्चे जो हैं वो कभी 11 बजे उठ रहे हैं, कभी 12 बजे उठ रहे हैं, कभी 8 बजे उठ गए, कभी 2 बजे उठ रहे हैं, रात को 1 बजे कोई सो रहा है, रात को कोई 3 बजे सो रहा है. You don't have to be जिसको हम कहते हैं draconian, and you don't have to be Hitler कि बस ये ऐसे 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 होना चाहिए. Be understand that this is hard for children and give them a little bit space as well, but within that space there's got to be a schedule. So अगर जो भी आपके घर का हिसाब किताब है, let's say आपने डिसाइड कर लिया कि 10 बजे बच्चों ने 10 बजे तक उठ जाना है, उसके बाद whatever they do, चाहे नाश्ता है, ये है, and then meal times, their reading time, their अगर आप थोड़ा बहुत उनको पढ़ा रहे हैं, online classes हो रही हैं कुछ बच्चों की, so I think those things are important. But in terms of sports, yes, it's hard to go outside, but I've also been telling parents that be creative. Okay, so what is it that you can do at home? Given your home circumstances, is there a way, टेरेस आपके पास है कि आप थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए बच्चों को ऊपर ले गए, या आपका गार्डन है आप बाहर ले गए, play with them, let them play with each other. अगर siblings वगैरह हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं, या they're skipping rope, they're playing badminton, whatever it might be, it's extremely important for them to get some physical activity. अगर आपके घर के पास कोई पार्क है जिधर इतने ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, so take them for a little bit, physical distance maintain करें, मास्क पहनाएं उनको, पर थोड़ी देर के लिए ले जाएं, स्विंग्स वगैरह पे ना डालें, बिकॉज अगर दूसरे बच्चों ने हाथ लगाया हुआ है, वो किया हुआ है, but just for running around, just for a little bit of a walk with you, that is okay. That is okay to go out in areas that you think are safe. अगर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेट्स से आप छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं, जगह नहीं है, बाहर जगह नहीं है उनके लिए, तो घर में YouTube वीडियोस बहुत ज्यादा अब हैं जिसमें बच्चे किसी किस्म की एक्सरसाइज रेजिमेन रोजाना कर सकते हैं. Make it a family thing. It's really nice for all of you together to kind of say कि we are going to do 20 minutes of gym or aerobics or I don't know yoga, और बच्चों के योगा भी हैं, बच्चों के aerobics sessions भी हैं, 15 मिनट के, 20-20 मिनट के on YouTube. Make that a scheduled thing with your children. And what would be really nice is let them lead it. Let them lead you. Like आप और आपके husband या घर में और भी जो बड़े हैं, वो पीछे सफ में खड़े हो जाएं और बच्चों को आगे खड़े होने दें अगर इतने बड़े हैं, that they are leading that exercise, जो आप लोग सब साथ मिलके कर रहे हैं. So those things are important. You've got to be a little bit creative, but if you try hard enough, it's possible कि बच्चा constantly TV नहीं देख रहा है या constantly screen पे नहीं है. बिल्कुल, और आई गेस इससे एक बेटर चीज़ ये भी होगी कि आप लोग एक फैमिली टाइम वाला कंपोनेंट, क्योंकि आजकल 2 वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, बट वर्क फ्रॉम होम वो अभी लास्ट सेशन में सोहेल ज़ंदानी ने भी मेंशन किया कि वैसे अगर हमारे ऑफिस के टाइमिंग्स 9 to 5 होते थे, तो अब वर्क फ्रॉम होम 8 to 8 हो रहा है. मतलब रात में इतने थक जाते पेरेंट्स कि फैमिली टाइम हो नहीं पाते. तो आई गेस इस बहाने एक फैमिली टाइम का भी बहुत अच्छा एलिमेंट मिल जाएगा यहाँ पर. सो या Ambreen, I think I've lost you. ओके, सॉरी मेरा थोड़ा सा. It's okay. ऑलराइट, ओके. सो हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि my daughter is 4 years old and do not respond her name. Any suggestions? She's scaring and screaming more.
So I'm going to continue with the Sorry. question. That's okay. Yeah. I'm going to continue answering the question. So again, if your child is 4 years old and is not responding to name, that's not okay. You need to absolutely have her seen by take her to your, if you have a trusted pediatrician, take her to a pediatrician first. But it's important to understand why there is a delay. There's obviously a speech delay, which could be that whether hearing में issue आ रहा है या expressive language में issue है, but assessment की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. So take them to your pediatrician, and then she probably would need a speech therapist. All right. Okay. We have another question that my baby is dystonic and she's 3 years old. I have tried a lot, but she still cannot learn how to wait for her turn. She becomes very angry if we don't listen to her and ask her to wait. What should I do? I sometimes feel that she has symptoms of hyperactivity, but again, we have adopted her and maybe she has been new to the family life. Please guide me. I guess a बहुत relevant question है. Right. So again, thank you for your question, Samira. And again, in this stance, first of all, important. It's kudos to you that you're picking up these things. I think it's very very important. मैं parents को हमेशा ये बोलती हूँ कि जरा सा भी खांसी नजला होता है तो हम फौरन बच्चे को उठा के पीडियाट्रिशियन के पास ले जाते हैं कि कुछ ठीक नहीं है. लेकिन अगर इस तरह की चीजें होती हैं जिसमें या तो वो सुन आवाज जवाब नहीं दे रहे हैं अपने नाम से, या उनको हाइपर एक्टिविटी है और आपको लग रहा है कि ये चीज ठीक नहीं है, तो अक्सर औकात बड़े, हमारे घर के बड़े भी ये कह देते हैं कि तुम खामखाई में परेशान हो रही हो, कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर के पास ले जाने का, कोई जरूरत नहीं है नफ्सियाती डॉक्टर के पास ले जाने का, कोई पागल तो नहीं है बच्चा, दिस दैट एवरीथिंग. Those are I'd like that these kind of conversations to become conversations of the past. Right? I think that we have moved forward. I think that it's time for all of us to understand that बच्चे की emotional, mental health is as important. In fact, it's pretty much part of their health. Right? There is no health without mental health and emotional health and mental wellness and emotional wellness. So one, thank you for picking this up. But again, my suggestion to you would be that please get her evaluated. Get her evaluated by your pediatrician, and then if they feel, then to a psychologist or a psychiatrist. I think it's important. It may be nothing. It may be that that the child is having a hard time adjusting to a new environment. It might be that the child is not able to express whatever conflicts that she has inside her, so it's coming out as anger. Or it might be that there is ADHD, or there are multiple reasons. Importantly, और वो आपको psychiatrist या psychologist या आपके अगर pediatrician इस area में उनको पता है इन चीजों का, well versed है, तो वो आपको बता देंगे. So but it's important to start early, to pick these things early, because intervention जो कुछ भी है, चाहे वो intervention is just about parent management training, हम आपको थोड़ा सा सिखा देंगे कि आप anger जब उनके anger tantrums होते हैं या anger outbursts होते हैं तो आप उसको कैसे manage करें. So it could just be a little small measure like that, but it's important to address these things as soon as possible ताकि ये और ज़्यादा severe ना होती चली जाए. Bill. All right. So we have another comment by Akbar Ali that I do all these things. I guess this is amazing because not only mother but both the parents should be very concerned about the child's growth and everything. So thank you for your comment. Sumaya ने पूछा है कि is ADHD the same thing as ADD? I guess ये डॉक्टर आयशा मियां ने रिस्पॉन्ड कर दिया था. डॉक्टर आयशा मियां का छोटा सा आप इसको जवाब वापस देते. So the answer is that no, it's not. I mean, it is ADHD, but कुछ बच्चों में hyperactive kind जो है वो ज़्यादा common होता है, जिसमें H piece है, और कुछ में hyperactivity इतनी नहीं होती है, inattention is more prominent, तो उनको हम ADD कहते हैं. But it's pretty much the same disorder. All right. Okay. हमारे पास एक और question आया कि is it ADHD or autism that your kid has a habit of putting his hand near his mouth and fidget? Or you can say freeze like action, especially when he's excited or overwhelmed. How can he overcome it? Because the age is 8 and in peers and in the schools, he has been ignored, especially playing the team sports. It's kind of mystery to us. Okay, so Sharmeen, it's a good question. I'm not very sure that I completely understand what's going on, and it's hard to
give answers to specific situations. I always tell parents that agar aapka again koi is tarah ka concern hai, I mean it could be neither ADHD or autism. It could be something totally different. It could be a tic disorder. It could be Exactly. something that a child has, and which could be common. A lot of children have tics, और वो tics ठीक हो जाते हैं, खुद ब खुद ही ठीक हो जाते हैं, या with a little bit of behavioral management ठीक हो जाते हैं. So it could just be that. So again, what I always tell people is parents is कि अगर आपको कोई भी symptom concerning लगे, तो please reach out to अब तो बहुत ज़्यादा lots of good psychologists that are able to answer some of these questions, or reach out to a child psychiatrist, or reach out to a good pediatrician. Again, लोग इस डर से नहीं जाते कि हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो वो दवा दे देंगे. So again, I'm telling you that no, pediatricians, anyone who works with children, hopefully should not be trigger happy about giving medication, should be very conservative about giving medications, and most of the times they will just give you a little bit of sense of कि आप ये करके देखें, आप घर में ये behavior अपना change करके देखें, and most of the things will just go away. बिल्कुल. जैसे इसमें मैं ये बात भी इंक्लूड करूंगी कि जैसे काज़िम ट्रस्ट वी वर्क ऑन अ ट्रायंगल, कि अगर साइकोलॉजिस्ट बच्चे पे काम कर रहा है तो उसके साथ साथ पेरेंट्स और टीचर्स को भी हम अलाइन करते हैं, क्योंकि आई गेस कि साइकोलॉजिस्ट के पास चले या साइकाइट्रिस्ट के पास वो एक बार जा रहा है, हफ्ते में एक बार साइकोलॉजिस्ट के पास आ रहा है, 2 बार थेरेपी के जा रहा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर स्पेंडिंग विद देयर पेरेंट्स एंड टीचर्स व्हिच हैव वेरी स्पेशल रोल. सो या आई गेस जो आपने बोला उसी बात को कंटिन्यू करूंगी कि ये बिहेवियर्स को मॉडिफाई करना पेरेंट्स के थ्रू बहुत इम्पोर्टेंट है. बहुत ज्यादा. Right. And So, just say it could also be anxiety. This child could be just an anxious, shy child, and which is why when he gets excited and stuff. So again, just Ambreen ne bhi bola, aur maine bhi, the same thing that we're saying, that it could be a number of different things. But just that symptom that you say is not a symptom of either ADHD or autism. बिल्कुल. अच्छा, एक और हमारे पास कमेंट अकबर अली सर ने किया है कि he has 12 years old autism son and he has attended a lot of your workshops, so he's appreciating you. Okay, so we have another comment Samira की तरफ से. Is it possible to have psychological assessment if the child is not able to speak, sit or have delayed milestone? So first of all, thank you, Akbar Saab, for your appreciation. And and again, I'm assuming कि आप APACT के through आए हैं, our family, which is our Autism Parents in Action का group, जो कि parents से ही चलता है. So once you all know, one of the big things that I would like to talk about here, and I think Ambreen's also brought that up, that the more parents can be advocates for their children, the better Pakistan will become in the area of child mental health, because this is a new field. People don't understand this, and there are all sorts of myths associated. So जब parents advocate करते हैं, जब parents अपनी voice आगे लेके बढ़ते हैं और बताते हैं कि नहीं, this is what it is, and your child needs this, or here are the resources, then उसमें बहुत strength है. हम psychologists, psychiatrists के अंदर वो चीज, it's like we can't, वो impact नहीं आ सकेगा जितना पेरेंट्स की एडवोकेसी से आता है. तो प्लीज व्हाटएवर यू लर्न, एडवोकेट फॉर योर चाइल्ड. Samira, yes, absolutely. A psychological assessment बिल्कुल हो सकती है, and if the child is not able to speak or has delayed milestones, so होनी चाहिए. So again, my response to you would be start with your trusted pediatrician, and then move on from there to kind of get an assessment, because a delayed आपके जहन में delayed होगा, शायद delayed ना हो. But अगर उनको भी लगता है कि नहीं, these milestones are delayed, then of course there are lots of avenues for psychological assessments these days. And a good psychologist will tell you that आपको पूरे बहुत ही extensive evaluation की शायद जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ इस area के evaluation की जरूरत है, and then slowly you'll get onto the right path. स्पेशली जब चाइल्ड डिस्टोनिक होता है तो माइलस्टोन्स जो वो नहीं कर पाता उसको लोग डिलेट के योजना में भी ले आते हैं, जबकि वो उनकी खुद ही रिजर्वेशन होती है. तो यस, डेफिनेटली. हमारे पास एक और क्वेश्चन है, व्हाट टू डू अबाउट अटेंशन स्पेन ड्यूरिंग वर्क टाइम. आई गेस ये अडल्ट ADHD की यहाँ पर बात हो रही है, आई फील.
So, Elsa, again, this is it's a good question. I'm glad it's been brought up. I'm not so sure if I have the exact answer, because it's a large area that you're talking about. Now, attention span might be, you might be having difficulty with attention span because your work is boring, or you find your work boring. It might be happening because it's not stimulating in some ways for you. Now that work from home is happening, it's completely shifted the paradigms of what work meant. Pehle, a lot of people were able to concentrate because there was a lot of buzz around them. दूसरे लोग होते थे, आपकी टीम होती थी, आपके कोवर्कर्स होते हैं, आप उनसे बात कर लेते हैं, आप थोड़ी देर 15-20 मिनट काम कर लेते हैं, फिर आप उठ के थोड़ा एक कप चाय पी लेते हैं, किसी से बात कर लेते हैं 5 मिनट, फिर आके काम करते हैं. Very different. Then now you're like kind of stuck to Zoom for the whole day, and there is no one to go talk to, and there's no one to kind of help you take some breaks, which are very, very important in a work situation. So it might be happening because of that you're having a difficulty with attention span. And for some people, as I said, कि तो concept ही नहीं था पहले कि adult ADHD भी होता है. But yes, children don't grow out of ADHD. Once you have ADHD, it's a neurodevelopmental disorder. You have ADHD. It doesn't affect you so much because, again, as I said, your work is a little bit different. अगर जो बच्चे बहुत creative होते हैं, वो creative lines में चले जाते हैं, so they manage okay. But I think if it's still concerning, I do have some patients that I continue to see as adults as well. Some of them take medication, some of them don't take medication. But again, if you feel that this is a major concern, जिससे आपका work affect हो रहा है, anything related to psychology and psychiatry is all about functioning. So if functioning आपकी day to day pervasively over more than 2 weeks, 3 weeks, 1 month pervasively disturb हो रही है, and you're not able to function according to your potential, then it's something that you should think about and maybe just get us formally assessed. बिल्कुल. आई गेस दैट्स वेरी रेलेवेंट बिकॉज लोग अक्सर हमारे पास ये आते थे, एक मिथ भी ये इससे एफिलिएटेड है कि बच्चों को एडीएचडी हो सकता है, मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मुझसे नहीं हो सकता. बट कभी कभी बचपन में वो इग्नोर हो जाते हैं, और बड़े होके जब हम एक्चुअली जॉब ज्वाइन करते हैं और हमारी जॉब में जो कि मेजर सिम्टम्स भी होता है कि इनकंसिस्टेंसी जॉब में आ रही होती है, जॉब में आप फोकस नहीं कर पा रहे होते, रिलेशनशिप में इनकंसिस्टेंसी आ रही होती है, तब लोग थोड़ा सा कंसर्न होते हैं और उनको फिर पता चलता है. तो उसके लिए एक और मैं यहाँ पर इंक्लूड ये भी करना चाहूंगी कि अगर आप अपने वर्क प्लेस में अगर जूम की मीटिंग्स हो रही है, बीच में छोटा अगर ब्रेक्स ले ले, ब्रेक से अटेंशन स्पैन वापस से फोकस होने में हेल्प करता है, तो दैट कुड मे बी हेल्प यू इन दैट सिचुएशन. अच्छा, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इमोशनल ट्रेनिंग एंगर फ्रस्ट्रेशन. आई गेस उन्होंने जनरली लिखा है कि एक मे बी शी मेंट कि एंगर फ्रस्ट्रेशन जो बच्चों में होते हैं उसको कैसे मैनेज किया जाता है, तो आप अगर उसका आंसर कर दें. Right. So I'm not so sure. I can't see कि किसने सवाल पूछा है, but again a good question. Thank you for your question. देखिए, मैं पेरेंट्स के सामने बच्चों को कहती हूँ जब वो मेरे क्लिनिक में आते हैं कि बेटा गुस्सा सबको आता है, क्योंकि बड़ों को गुस्सा आता है, हर एक को गुस्सा आता है, तो बच्चों पे भी उनका भी हक है गुस्सा करने का. आई डोंट थिंक दैट ये हमारे कल्चर में बहुत ज्यादा है कि हम बड़े हैं, हम कर सकते हैं, आप ऐसे बात नहीं कर सकते. दैट्स नॉट फेयर, राइट? सो चिल्ड्रन ऑल्सो गेट अपसेट. What you do with your anger is the question for adults and for children, right? कि हम उस एंगर को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, एंड इट बिकम्स एन अडल्ट्स रोल, चाहे वो स्कूल में है, स्कूल में सिखा रहे हैं या घर में बच्चे माँ बाप सिखा रहे हैं या psychiatrist psychologist सिखा रहे हैं कि how do you cope with that anger in a way that is acceptable in society, that is acceptable in any kind of social setting. किस तरीके से आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, किस तरीके से आप उसको चैनलाइज कर रहे हैं, किस तरीके से आप दूसरे को बता रहे हैं कि जो भी बात हुई है, जो भी चीज हुई है, उससे आपको you've gotten hurt or you've gotten upset or whatever. So for parents, there is a significant Kazim Trust पे भी होती है और जगहों पे भी होती है what we call PMT or parent management training, where we teach parents how to manage these behaviors for their children at home. देखिए, बच्चों की कोई भी चीज वैक्यूम में नहीं होती है. इट्स ऑलवेज हैपेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फैमिली. सो या तो रोल मॉडलिंग हो रही है, वो देख रहे हैं कि कोई इस तरीके से घर पे एंगर को मैनेज कर रहा है तो हम भी ऐसे करेंगे, या फिर उन्होंने स्कूल में सीखा है, लेकिन आई जस्ट, और या कहीं और सीखा है. बट माई पॉइंट सिंपली बीइंग दैट पेरेंट्स नीड टू लर्न
how to deal with a child when they get angry, and uske puri science hai piche. Okay, so this is not something that you can just say कि बच्चे पैदा हो जाते हैं तो पल भी जाते हैं, नहीं पल जाते. There is a science to parenting, and and when you have a child that is having a little bit of challenging behaviors because of whatever reason, then I think it's important for parents to learn क्या कर सकते हैं. गूगल पे भी, आपके इंटरनेट पे भी बहुत ज्यादा, सॉरी यूज द वर्ड गूगल रॉन्ग, बट इंटरनेट पे भी बहुत एवेन्यूज हैं जहाँ पे आप यू कैन लर्न सम ऑफ दीज बिहेवियरल टेक्निक्स. There is one particular website called SOS, Self-Help for Parents with Children with Behavior Problems. Lynn Clark, LYNNCLARKE. Lynn Clark is the author of a book, and she curates that website, and it's very good, gives you a lot of very good information on how to manage children's sort of behaviors at home. So I would tell you to start from there, and then agar zarurat pade to you can also take some classes. डेफिनेटली. यहाँ पर एक और क्वेश्चन आया है कि हाउ कैन आई फाइंड आउट दैट माय चाइल्ड वाज मिसडायग्नोस्ड विद ADHD? You can come to me anytime. I'm well known for undiagnosing children. Okay, and I'm very well known in the community for taking them off of medications that जिनको उनकी जरूरत नहीं है. So no, I'm just just flippantly मैंने बोला, but please अगर इस तरह आपको लग रहा है कि आपको second thoughts आ रहे हैं कि मेरे बच्चे को गलत diagnose किया है, so please do seek out help from, again, a trusted place, a trusted child psychiatrist or a child psychologist, and kind of get them reassessed. It's important. और आपका ये right है. अगर किसी को डायबिटीज डायग्नोज होता है, वो 3-4 डॉक्टर्स के पास जाता है. किसी को गॉड फॉरबिड कैंसर डायग्नोज होता है तो वो 3-4 डॉक्टर्स के पास जाता है. सर्जरी किसी को कोई कह देता है तो दे गो सीक सेकंड ओपिनियन. So no harm in seeking second opinion. And there are some physicians who are very good at taking good histories, and physicians and psychologists, and saying that no, this is not the right diagnosis. Let's go back. This is what it is. बिल्कुल. इसमें यहाँ पर एक और ये भी चीज़ होती है कि अगर एक बच्चा मेडिसिन फॉर एग्जांपल ले रहा है साइकाइट्रिस्ट से या थेरेपीज कंटिन्यूसली ले रहा है, तो उनके बिहेवियर में ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चेंज आता है, बट दैट डजंट मीन कि ADHD खत्म हो गया या वो मिसडायग्नोस्ड हुआ था. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. हम यूजुअली कहते हैं कि 2 साल के बाद लाजमी हमें रीअसेसमेंट की नीड आ जाती है कि अगर ऑटिज्म है तो ऑटिज्म क्या पता उसकी जो सीवियरिटी है वो कम हो जाए, ADHD की सीवियरिटी कम हो जाए. तो आई गेस ये भी एक यहाँ पर वैलिड पॉइंट होगा कि यू माइट नीड टू गेट रीअसेस कि क्या पता उस वजह से इसमें बेहतरी आ रही है, which is always good. Absolutely. And again, people say कि अब तो बेहतर हो गए, अब हम थेरेपीज छोड़ दें, अब तो बेहतर हो गए, अभी हम दवा छोड़ दें. So again, this is what I call a chronic disorder. It's like आपके एक लाइफस्टाइल चेंज की जरूरत होती है. It's like having high blood pressure कि एक दफा हो गया तो then you need to live your life knowing that I have high blood pressure, so I need to cut down salt, I need to exercise. So that's how it is with ADHD as well. The one thing where ये सवाल नहीं आया, but I want to quickly just sort of take about 30 seconds to say this, Ambreen, that it's people say कि ADHD है so learning नहीं हो पाएगी, इनकी achievement नहीं हो पाएगी, ये आगे जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाएंगे कि नहीं. I want to really bust this myth. Okay, ADHD has nothing to do with IQ. Nothing to do with IQ. A lot of very smart people who have become astronauts and doctors and engineers and whatever you can be, or artists and painters and stuff have had ADHD. And they have done really, really well. Michael Phelps, who's our big swimmer, Olympic gold medalist, has ADHD. So it has nothing to do with IQ. It has nothing to do with achievement. It has nothing to do with you kind of fulfilling your dreams in life of becoming whatever you want to become. थोड़ा सा मेहनत पेरेंट्स को करने की जरूरत है और बच्चों को सही मैनेजमेंट करने की जरूरत है, और ताकि उनको सही रिसोर्सेज मिल सके, and they will be able to get whatever they want to in life. बिल्कुल. एंड डॉक्टर आयशा, मैंने ये फाइंड आउट, जस्ट मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि ADHD के बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं. आई हैव अ चाइल्ड हु कैन मेक अमेजिंग पेंटिंग्स. वन ऑफ माय क्लाइंट्स सिंग्स लाइक, मतलब वो अमेजिंग फेमस आर्टिस्ट टाइप उसकी आवाज है, एंड आई हैव आल्सो मेड दिस वीडियो. बहुत हमें बस ये है कि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, बीइंग अ साइकाइट्रिस्ट, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर, आपको इनके बस टैलेंट को अप्रिशिएट करना है, मोटिवेट करना है. हो सकता है कि अगर बच्चा एकेडमिक में अच्छा नहीं भी कर रहा बिकॉज ऑफ सम
हमें शूज फोकस नहीं कर पा रहा, तो हमें देखना है कि किस चीज में वो अच्छा, उनको फिर उस लिहाज से मोटिवेट करना है। So we have another question कि how, if you can please talk about managing stress and anxiety in child. Okay, so thank you for that, Sohila, that question. मैं काफी देर से पढ़ रही थी कि इधर आ रहा था उसकी और सवाल की बारी नहीं आ रही थी. So it's again, stress and anxiety is a little bit different from ADHD, right? So I am not so sure if you're asking about stress and anxiety in a child with ADHD or without ADHD or just generally. I guess Sohela is talking about child with ADHD and LD because she's a remedial therapist at our organization only. Right, so I guess वो इस लिहाज से पूछ रही है. ठीक है, okay. So again, होता यही है, जैसे मैंने बिल्कुल शुरू में बताया था कि whenever you're trying to focus on one task, आपके बाकी centers of the brain also light up, and children with ADHD have a hard time just focusing on one thing. वो हर चीज पे फिर attention focus कर रहे होते हैं, which can cause them to become anxious, which can feel very overwhelming, right? Because it's like going into a grocery store and kind of कि मुझे पता है कि मेरी list पे लिखा हुआ है कि मुझे I need to get eggs and I need to get bread, but this aisle में, oh, these cookies look new, this looks very nice, so इंसान उधर चला जाता है, oh, there's a new detergent that showed up, let me go check on that, oh, there's a new toothpaste that's looking, so there people with ADHD kind of start to pay attention to everything that's around them, and it's very likely that they will leave the grocery store with a huge big cart of everything except the eggs and the bread that they came to get, right? बाकी सारी चीजें ले लेंगे. So the environment is very overwhelming for them, because उनको सारे they're focusing on everything that's going on around them, which causes anxiety. So that's the one piece. It also causes stress because sometimes children with ADHD who have average to above average IQ are able to figure out that they have a difference. There's some difference in how they're learning and how other kids are learning. So that can cause low self-esteem, कि हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हम उस तरह ग्रेड्स नहीं ले पा रहे, या फिर भी हमें कॉन्स्टेंटली डांट पड़ रही होती है, फिर भी एवरीबडी थिंक्स दैट मेरी वजह से सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और हर वक्त घर पे जो कुछ भी हो रहा है, आई एम द वन हुज being told that तुमने गलत काम किया था. Then that happens with children with ADHD. So that causes them to become very stressed out as well. So the biggest thing with stress and anxiety is first to figure out कि क्या वजह क्या है stress और anxiety की. We kind of go back to figure out the cause of why it's happening, and then we respond to that. So if it's happening because parents are stressed out, then we will work with the anxiety, parents की anxiety, because we do know that parents के बच्चे बहुत ज़्यादा anxiety absorb करते हैं. If it's the school related issue, then we're going to work in that area. If it's happening because of some social relationships, that a child is unable to maintain friendships, because ये बच्चों में बहुत हो जाता है ADHD के, then we'll work on that. If the child is being bullied in school for some reason, and that's causing stress and anxiety, then we'll work on that. And then, working with that stress and anxiety is, there are all these things जहाँ पे हम deep breathing exercises भी बताते हैं, mindfulness भी बताते हैं. We tell them to, parents को हम बोलते हैं कि उनको co-curricular activities में डालें ताकि वो अपनी, अगर उनको music पसंद है तो please put them in guitar lessons ताकि, they're able to develop that skill set and then feel good about themselves. So all of these things help in regulating anxiety. मेरा clinical पाकिस्तान में especially experience ये रहा है कि parents बहुत ज़्यादा anxious होते हैं, और जब पेरेंट्स एंशियस होते हैं तो बच्चे तो ऑब्वियसली एंशियस होते हैं. सो जब एंजाइटी में बच्चों की देखती हूँ, स्ट्रेस एंजाइटी, तो मेरा सबसे पहला फोकस होता है कि मैं पेरेंट्स के साथ काम करूँ और उनको तसल्ली दिलवाऊं कि आप you have to role model for children in not feeling anxious and maintaining and whatever their needs are, and then work with them around that. बिल्कुल. I guess that's actually very true कि पेरेंटल काउंसलिंग, बच्चों की तो बिहेवियर थेरेपी होती ही है, वो तो एक प्रोसेस का पार्ट ही होता है, बट साथ में पेरेंटल काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है. आई गेस शर्मीन का भी यही क्वेश्चन था कि हाउ कैन यू टॉक थ्रू अ चैलेंजिंग चाइल्ड अबाउट हिज एंजाइटी. बच्चों से हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? या right. So again, thank you, Sharmeen, for the question. So you start, first of all, I think it's so important that you're asking this question, that how do we talk to a child about his anxiety, because हमारे यहाँ पे हम बच्चों से तो बात करते ही नहीं है. हम बड़ों से बात कर रहे होते हैं about बच्चों की related चीजें.
and it's incredibly important to talk to children. Okay, it's बिल्कुल incredibly important to be honest with them. It's incredibly important to be transparent with them. बिल्कुल Sometimes parents get upset with me because मैं दवा की बात जो है बच्चों के सामने करती हूँ, but I'm like, that child is going to take medication. आपने उसको जो भी बताना है कि आप brain के focus के लिए दे रहे हैं, आप brain के vitamin के लिए दे रहे हैं, based on the age of the child, we can talk about these things and explain to them. But think about the developmental stage of the child, and then start to talk to them about what your concerns are and what their concerns are. And you have no, sometimes you'll be very, very surprised at the insight and the intelligent remarks and the intelligent sort of, understanding of their problem that comes from children. हमें तो पता ही नहीं होता और उनको पता है because they're experiencing it, right? So one, it's important to talk to them. किस तरीके से स्टार्ट करना है? बिल्कुल उस तरीके से करें जैसे आप किसी से भी बात करेंगे कि बेटा, I've been seeing that these are some of that you're struggling with some of these issues. You're struggling with, आप stressed out हो जाते हो, या आप कोई आपसे कुछ कहता है या काम अगर ज्यादा आ जाता है तो you get worried about things. So start with that conversation. Give them space to tell you what they think. Listen to them, and then uske baad take that conversation forward. Now again, it's important while you're talking to your child about anxiety for you to not feel very anxious, because again wo role modeling sahi honi chahiye ki it's not a big deal, we can manage it. I can manage it, you can manage it, and if we put together a plan, then ye manage ho jayegi. So they need to see you calm to help you. Now the other thing that I say to parents all the time is teach. Sometimes children will not tell you about their things. Teach them how to talk about what they are going on by telling them about what you are going through. So that is very helpful. So I tell parents कि आप हर वक्त कहते हैं कि बच्चे तो स्कूल से आके कुछ बताते ही नहीं है कि उनके साथ स्कूल में क्या हुआ, उनसे पूछते रहो और वो नहीं बताते कि स्कूल में क्या हुआ. आप बच्चों को कितना बताते हैं कि आपके काम में क्या हुआ? Do we ever sit down with our children and say कि आज काम पे ये problem हुआ था, आज ये issue हुआ था, आज I got into this little bit of a difficult situation, but this is how I managed it. We don't talk to children about them. So we are not role modeling, right? So start doing that at home. I'm not telling you कि आप सारे अपनी जो भी परेशानी है बच्चों पे डाल दें. That's not what I'm saying. What I'm saying is that घर में एक इस तरह का माहौल पैदा करें कि आप घर में आके बात कर रहे हैं कि today this was a wonderful thing that happened at work today, or I got caught in this issue and I this is how I managed it. And start talking about these things without expecting कि बच्चे आपको कुछ बताएं. You are teaching them, and then because they've learned that you share, they will also start sharing whenever they're ready, because they've learned from you how to share. I guess it's a very very amazing point that you have shared, and एक बहुत valid है हर parent के लिए. It's very amazingly described. Thank you, Dr. Ayesha Mia, for this point especially. एक last question हम लेंगे, इसके बाद हम इस live session के इख्तिताम की तरफ जाएंगे. So शर्मीन का ही question है कि does ADHD get obsessed with gaming and YouTubers with gaming? Talking them away or reducing them make them very impulsive. At some places, gaming helps ADHD, but for parents, it's overwhelming that all sorts of behavior issues comes up. बिल्कुल. Okay, so Sharmeen, गेमिंग का तो मेरा भी अपना बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है. कांस्टेंट मैं सोच रही होती हूँ कि अपने बच्चे को कितना अलाउ करूँ, कि कितना ज्यादा, how much of screen time should they be allowed. Because one of the things that's happening now with us is that YouTube and YouTubing and these gaming and stuff is a part of their life. It was never a part of their life. It never was a part of our life. So हम बहुत anxious हो जाते हैं. But ये उनकी जिंदगी का हिस्सा है, और यही करते करते कुछ बच्चे जो हैं वो पता नहीं कितने फेमस यूट्यूबर्स बन जाते हैं और हमसे कहीं ज्यादा पैसे कमाते हैं, और अपने वो भी. So I think that it's all about moderation. I think that's important. As a parent, you understand your child, so you know कि कितना gaming, कितना YouTubing, कितना screen time is enough for a child. There's very clear evidence that more than 4 hours, more than 3 to 4 hours of screen time every day will exacerbate ADHD or lead to symptoms of ADHD. We know that. And 3 से 4 घंटे बहुत आराम से गुजर जाते हैं between your phone, between your Netflix, between your gaming and stuff. So think about that. Think about कि कितना ज्यादा बच्चों को आप दिखा दें, फोन पे अब लिखा होता है कि आपका कितना screen time है. So teach children how to measure their own screen time. So that's important.
अगर तो आपके बच्चे में because of gaming, because of YouTube watching and stuff, behavioral problems आ रहे हैं, then you need to address those. You need to address those. You need to give consequences. You need to explain to children that, I'm seeing these behaviors and that's not okay. And you need to then, curb those, or sort of nip them in the bud in some ways. That as long as you're doing it, but it's not affecting your functioning, your social relationships, your behaviors, and stuff, then it's okay. But once this starts happening, then this is not okay. So I think that is important. One very important thing, again, another thing that I tell parents all the time, that you are their parents, you're not their friends. You don't try to be your children's friends. Your responsibility, your role is a very different one. So at some point, you kind of feel कि बच्चे नाराज हो जाएंगे, upset हो जाएंगे, आपसे एक हफ्ता बात नहीं करेंगे. अगर आपकी बात करें तो आप फ्रेंड्स बनने के चक्कर में जो है उनको रोकते नहीं किसी चीज से. That's not okay, right? जब वो 25-26 साल के होंगे तो वो आप ही को वापस आके बोलेंगे कि हम तो छोटे थे, आपको तो पता था, आपने क्यों नहीं रोका, right? So please continue to sort of be their parents and tell when you feel कि ये चीज हाथ से निकल रही है, put consequences in place and put limitations in place. That is your role to do. नाराज हो थोड़े अरसे, but you are their parents. That's fine. Don't worry about that. Alright. बस ये लास्ट क्वेश्चन आया हुआ है, मैं चाह रही हूँ कि आप इसको आंसर कर दें, and then we can wind up. Any supplements to help ADHD symptoms? Right. So Nida, good question. It gets asked all the time. We all love using supplements because हमें थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है कि ये drugs नहीं है, ये medications नहीं है, natural है, stuff. So my simple question, my simple answer to you would be that there is no evidence. There is no scientific evidence, and that because I'm a scientist, because I'm a physician, I work with evidence that shows about any supplement कि उसको देने से ADHD के symptoms बेहतर होंगे, right? Now, having said that, some parents will come and swear कि gluten-free diet से बच्चों का ADHD symptoms बेहतर होते हैं, या omega-3 से बेहतर होते हैं, या sugar नहीं देने से बेहतर होते हैं. So I tell them कि please, अगर कोई चीज से आपको लग रहा है कि things are getting better, and it's something that is not detrimental to a child's health, right? So don't give them, scary levels of supplements जिससे उनके toxicity हो जाए vitamins की या supplements की. Don't give them things जो आपको जिसको मैं पता नहीं है कि अंदर है क्या इसके अंदर. But there are other lots of evidence-based things. Don't lose sight of those because आप supplements पे बहुत ज़्यादा rely कर रहे हैं. राइट. सो दोनों चीजें साथ लेके चलें. अगर तो आप पाकिस्तान में ग्लूटेन फ्री डाइट मैनेज कर पाते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है, उससे तो मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ कि आप इतने एंशियस हो जाएंगे कि आप आपके घर में एक और मुसीबत ऐड हो जाएगी, राइट? बट इफ यू आर एबल टू, बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव एज वेल, ग्लूटेन फ्री डाइट, बट इफ यू आर एबल टू डू इट, श्योर, प्लीज करें. और कोई सप्लीमेंट्स देने प्लीज करें. शुगर वैसे ही अच्छा नहीं है तो बिल्कुल कम करें. बच्चों को आई ऑलवेज से दैट दे शुड नॉट हैव मोर देन वन sweet a day, whether it's one piece of chocolate or one piece of one slice of cake or one dessert a day. It's best to not have juices. नहीं होने चाहिए. fruit खिलाएं, fruit juice ना दें because fruit juice से fiber नहीं मिलता है. fruit is better than fruit juice. sodas नहीं दें. junk food को जितना कम कर सकते हैं कम करें. Those are good things anyways, right? Those are better for their health anyways, so focus on those things. Alright, I guess आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा कि आपने टाइम निकाला और आपने इतनी अमेजिंग सारे क्वेश्चंस को आंसर किया विद योर एक्सपर्टीज. एंड आप हमेशा यू ऑलवेज देयर फॉर काज़िम ट्रस्ट. हमारी कॉन्फ्रेंसेस में भी आके आप लोगों को हमेशा से मोटिवेट करती है एंड रियल पिक्चर दिखाती है, विच इज़ वेरी नेसेसरी बिकॉज मिथ्स ADHD के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएट होती है. सो ऑन बिहाफ ऑफ काज़िम ट्रस्ट टीम, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर टाइम. And thank you so much for being here. Of course, you're very, very welcome. My pleasure always. And whatever is needed to help our children, they are our future. I'm always here. I'm always here for parents, for children, for their mental wellness. And, let's hope to create a better world for tomorrow because we haven't done a very good job with this world right now. All right. Any last message that you can give to all the parents, because a lot of parents are, here listening to you. Any last words for them? So again, my last words would always be one. I feel very. I want to be. I'm very grateful
to everyone who sort of, reaches out and tries to understand a little bit more, wants to learn, wants to listen. If I'm able to be of help to anyone, always there. So I'm grateful for those opportunities as well. Focus on your children. I think this it's so important in a larger big picture piece as well, that they're going to be our future. They're much smarter than we ever were. This generation is much smarter than we ever were. They think about the world, they think about the earth, they think about climate, they think about bigger things जो कि शायद हमने कभी नहीं सोची थी, और अगर सोचते तो शायद दुनिया का ये हाल नहीं होता. So let's help them do that. Children with ADHD are very smart, are very creative, are very fun. I love working with children with ADHD because they're so lively, and they have all these great ideas जो कि शायद हमारे जो एक बहुत ही streamlined curriculum के अंदर फिट नहीं हो पाता. और फिर वो लगता है कि ये तो पढ़ाई में अच्छे नहीं है, ये तो मैथ नहीं सीख रहे, या इस्लामिक स्टडीज नहीं सीख रहे हैं, या उर्दू नहीं सीख रहे हैं, बट दे आर थिंकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट शायद हम नहीं सोच रहे. तो उस चीज को प्लीज बच्चों को इनकरेज करें, मोटिवेट करें, एंड साथ साथ दूसरी चीजों को, उनके को करिकुलर एक्टिविटीज को भी लेके चले. And again, anytime that you want to reach out to me, Kazim Trust has my email address. We can share it here as well. It's aisha.mia@aku.edu. Website पे भी आपको मिल जाएगा. Happy to answer your questions as well. Thank you so much, Dr. Ayesha Mia. So, everyone, we'll inshallah get back to you next Saturday with our 5th episode of Coffee with Kazim Trust. Thank you so much. Take care and have an amazing weekend. Allah Hafiz. All right, Allah Hafiz.